Good morning, everyone. Assalamu alaikum. Right. So let's listen to our fantastic good morning. So before I make a chance for all of you to say good morning, तो हम सब लोग क्या करेंगे? Come to the chat box and tell me how you're feeling today morning. You're feeling very cold, very warm, very happy, very excited. Chat box में आइए. Vanakkam. Somebody saying yes sir. Vanakkam. Good morning everybody. Lovely messages are coming. बहुत सारे messages आ रहे हैं यहाँ पर. Somebody saying fantastic, awesome. Okay, Jidesh Manji. Good morning. Yes. Ironisa madam is saying, what is that? Okay, good morning, sir. Right, very good. And awesome, excited. Okay, my God, fantastic. Okay, very excited, so much excited, so excited. Good morning. Anthony Roy is saying, feeling excited. Okay, great. So lovely. So somebody's saying very curious. Okay, I really like that word, curious. Somebody's very curious about today. Energetic morning, feeling very energetic and excited. Superb. Fantastic. So let's say good morning, indusviva in one voice. So I request all of you to unmute and say good morning, indusviva. 1, 2, 3. Good morning, indusviva. indusviva. Good morning, Prem Sir. Good morning, indusviva. Good morning, indusviva. Very good morning, Indusviva. Good morning, indusviva. Good morning, Prem sir. Good morning, Good Prem morning, Sir. Indusviva. Morning, Prem Good sir. morning, sir. Good morning, Hyderabad. Good morning to all the family. Fantastic morning. Good morning. Good morning to all. We have 390 people and the numbers are increasing. Very good morning. Very good morning. Thank you so much. Very good morning. Very good morning to all of you. Warm welcome. Thank you, sir. Good. So namaskar. Welcome to today's session. And I can see many people, बहुत सारे लोग यहाँ पर camera on करके attend कर रहे हैं. I really appreciate. What a fantastic commitment. In the morning at 6 a.m. That is 5:59. Already people are up and ready to learn something. बहुत बढ़िया. So what is that topic today? What we are going to discuss is again coming back to our journey with indusviva. indusviva के साथ हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको I want to give you some input, some information which will make you to set your mindset towards becoming successful. So definitely whenever we talk to great people, like for example अगर शिव केरा की अगर हम बात करें तो शिव केरा जी कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के अंदर लोगों को अगर कुछ सिखाने की बात होती है तो either we can talk to them about their skill set or we can talk to them about their attitude, their mindset. So because I believe करता हूं कि 80% for our success, it is more of our psychology. That is nothing but our mindset, and definitely skill set is 20%. That is actually the strategy to do something. So especially Shivkera was talking about going to a corporate and talking to the employees of that company. So aaj, especially the topic for today shall be employee mindset versus entrepreneur's mindset. I'm not going to discuss more about employee mindset, लेकिन मैं ज्यादा आज entrepreneur mindset के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा because I believe कि we are all, each one of us is an entrepreneur. यहाँ पर जितने भी लोग हैं 420 या 419 people and the numbers are gradually going up. I know some people they are taking time, 421 already. So we have 400 plus people here, those who are interested to become an entrepreneur. We all are interested to become entrepreneurs. तो आज मैं यहाँ पर especially to become an entrepreneur, what is the kind of mindset, हमें किस प्रकार का सॉफ्टवेयर को लेके आगे जाना है उसके बारे में आज we will discuss so that we will understand कि in this journey, more of setting your mind is important than looking at the skill set. The skill set will automatically be acquired, लेकिन हमें अपना attitude, अपना mindset को ready रखना पड़ता है. So because today's topic is going to actually increase your speed. आपका जो speed है, आपकी जो जर्नी के अंदर जो आप गियर शिफ्ट करना चाहेंगे, आपका स्पीड बढ़ाना चाहेंगे. How many of you would love to increase your speed? Come to the chat box and say yes, YES. Let me see how many of you are interested. कितने लोग interested? Okay, very good. Many people are saying yes. Fantastic.
Okay, great. Fantastic response, guys. I love that enthusiasm आपके अंदर. Enthusiasm होना चाहिए, because when you have the energy in you, that brimming energy in you, that is what takes you forward. So many people actually want to go forward, so they come and meet me. बहुत सारे लोग आकर मुझे मिलते हैं. I'm just back to, let me tell you, I was actually on a tour. Last 5-6 days, I was not at my desk. Yesterday, I came back to my desk. So I started last Thursday. I traveled to Wayanad, God's own country, Kerala. From there, I went to Kozhikode, that is Calicut, where Vasco da Gama landed. Okay. And after that, I had an event of 3,000 plus people in Calicut. Or uske baad, I went to Cochin, that is again another city in Kerala, South India. So wahan par we had a massive event, and after that I was driving down to Bangalore, and मैं Bangalore पहुंच गया. So last 5-6 days I was not at the desk, and I was traveling. बहुत कुछ सीख मतलब सोच रहा था मैं. What should be the mindset of an entrepreneur? Because when I went to Calicut, I remember Calicut is the first place. एक ऐसी जगह है जहां पर the first European landed. I think all of you know, आप लोगों को पता है, Vasco da Gama. Vasco da Gama, many years ago, he landed in Calicut, South India, and that is how the Europeans started coming to India. And उसके बाद they came here for business. They started building their business, and they started establishing the East India Company. और उसके बाद they made India colony, and we had to fight back to get back our country. तो बहुत सारा सर्कस हुआ इसके बीच में. लेकिन हाँ, इस दौरान हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है. But anyways, so talking about today's subject, तो आज हम बात कर रहे थे entrepreneurship के बारे में. तो what should be the attitude of an entrepreneur, especially in indusviva? If you want to move from the left quadrant to right quadrant, this is the book which talks about that quadrant. And of course, in a world of bucket carriers, जिसके अंदर लोग बकेट कैरी करते हैं अपने पानी भर के घर लेकर जाने के लिए, इन द वर्ल्ड ऑफ बकेट कैरियर्स, यानी बाल्टी उठाने के इस दुनिया में हम एक पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहते हैं. वी वांट टू बिकम दी पाइपलाइन बिल्डर्स. सो बेसिकली बीइंग एन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? यू आर बिल्डिंग अ पाइपलाइन जिसके थ्रू पानी नहीं बट आपके घर में पैसा आएगा. So पैसों का pipeline, building the money pipeline. So we have chosen direct selling industry, and especially being an entrepreneur, what kind of attitude we need to have. पहली चीज, the first thing to become an entrepreneur, एक entrepreneur बनने के लिए हमें boldness चाहिए हमारे अंदर. Boldness का मतलब क्या होता है? Right? You should be able to take many decisions. बहुत सारा डिसीजंस हमें लेना पड़ेगा. इवन वेरी सिंपल, indusviva बिजनेस करने के लिए यू हैव टेकन अ डिसीजन, दैट इज आल्सो अ डिसीजन. और बहुत सारे लोग, many people, they could not become somebody is saying Calicut Policili. Okay, that is the place where Vasco da Gama came down. Yes, okay, thank you Ranisha ji is telling Calicut Policili, that is I think the exact place where Vasco da Gama landed. So talking about indusviva's journey, indusviva journey के अंदर you have decided, आपने decide किया कि I will become an entrepreneur. This itself is a decision. It is one decision, but only that decision is not sufficient. वो काफी नहीं है. That is one decision of being an entrepreneur. You started your journey with indusviva, and उसके बाद you will be into a situation, ऐसे situation से आप गुजरेंगे जहां पर you will have to take more and more decisions. Right. Today, let us talk a little bit about decision, especially we are talking about the qualities of being an entrepreneur. Yeah, employee attitude versus entrepreneur's attitude. So, in the qualities of becoming an entrepreneur, एक entrepreneur बनने की जो qualities है, उसके अंदर one of the quality is the quality of being bold to take decisions. So we need to be bold to take decisions, or decisions के बारे में let me give you a little bit of an insight today. कि for example, entrepreneurs, how they can take the right decision. हम सही decision कैसे ले सकते हैं? For example, रंजित
from Mangalore is here. So Ranjit started indusviva a few years ago, let's say 2-3 years ago, and today he's a sapphire going diamond. I started my business. मैंने 2014 में अपनी जर्नी की शुरुआत किया. And I was always looking at my mentor and asking, Abhilash ji, how do we take the right decision? Because मैं देख रहा था, my mentor was taking many decisions just like that. He is a quick decision maker. तो मैं उनको एडमायर कर रहा था. I used to admire that, oh my God, he's taking so many decisions. Sir, I want to do this. Okay, tell me what is the plus and minus. Sir, this is the plus, this is the minus. Okay, do this. Sometimes he used to say, don't do this. And sometimes he used to say, okay, go ahead, do this. And he also used to take many decisions. So I used to wonder how to take the right decision. हमें लाइफ में सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए? बिकॉज मेनी पीपल हैव दिस मिथ, एक माइथोलॉजी या मिथ, इनके एक भ्रम होता है ना, यानी अरे वी शुड नॉट टेक रॉन्ग डिसीजंस. People are, scared. An entrepreneur cannot be scared. Of course, you should have fear. You need to manage fear, but you need to be also bold. वो कहते हैं ना, for example, अगर डर आपके अंदर 50% है या 49% है और आपके अंदर excitement भी है, boldness भी है, 1% ज्यादा रहना ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डर तो बिल्कुल कम हो जाएगा, डर तो होगा ही. डर होगा. You will always be having fear. You will always be stopped by a fear. But fear से ज्यादा हमारा जो boldness, वो 1% ज्यादा होने से भी it can be, managed. So how do we become a person who can take bold decisions? वो तो clarity के साथ मैं आपको बता सकता हूं. So taking the right decision, everybody is like, for example, today Deepthi madam is attending from Mumbai. She will tell me, Prem sir, tell me 5-6 decisions I want to take, and I want to become a diamond. Uma Maheshwar Rao will say, I want to take some decisions. Bhagyashri madam will tell, I need to take some decisions. So Santosh Verma ji is there, Naushad Bakar is there, Naushad P.A. Bakar is here with us, Leena Dasan, everybody. We all have to take some or the other decisions. So log kehte hain ki let me know what is the right decision and I will take the right decision. No, there is nothing called as right decision and there is nothing called as wrong decision. Oh my God, then how do I decide? How can I take decision? So that is called as decisive decision. For example, as an entrepreneur, हमारे अंदर एक quality होना चाहिए, that is, we should be ready to make mistakes. हमें मिस्टेक्स करने के लिए रेडी रहना चाहिए, हमें रिस्क लेने के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड यू शुड बी रेडी टू एक्सपेरिमेंट. इसका मतलब ये नहीं कि यू कीप ऑन डूइंग सम मिस्टेक्स. सी, वी कैन डू मिस्टेक, हम मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहिए. सो हाउ टू टेक द राइट डिसीजन टू स्टार्ट इंडस्विवा, ये एक राइट डिसीजन रहा. उसके बाद whenever you are taking a decision, keep this point in mind, हम सही decision कभी ले नहीं सकते. We cannot take the right decisions. We have to take a decision and make it right. यानी whatever decision you are taking, you have to make it right. Okay, Mrs. Deepthi ji, क्या आपने ये decision लिया indusviva business करने की? Is it a right decision? Sir, actually, I don't know if it's a right decision or not, but if I make this decision, if I take this decision and make it right, for example, Dr. Chandra Ratish is here, Mrs. Chandra Ratish. So she is a doctor. So she wants to do indusviva business. So is it a right decision? Nobody can tell you it's right decision or not. Lekin, if Dr. Chandra Ratish is continuously working in this business and empowering herself, or kuch samay ke baad she becomes successful, then she can say, I took a decision and worked towards making the decision right, or aaj when I look back in the past, my decision was a right decision. Nitisha Hashmi, she is a women entrepreneur. वो अपने घर में रहते थे, अपनी फैमिली को संभाल रहे थे, and today she is a fantastic women entrepreneur. So did Nitisha ji take the right decision?
No, she took the decision and made it right. So, दोस्तों, आपके journey में as an entrepreneur, one quality which you should have is decisive decision making ability. यानी boldness to take a decision and उसके बाद stand with your decision. देर विल बी नेगेटिव सिचुएशंस, देर विल बी क्रिटिसिज्म, देर विल बी, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत तमाशा करेंगे आपके साथ, आपको सर्कस की तरह देखेंगे और आपके डिसीजन पर हंसेंगे. यू नो, व्हेन पैब्लो स्टार्टेड बिल्डिंग द पाइपलाइन, लोगों ने कहा अरे वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन बिल्डर. यू रिमेंबर दैट स्टोरी, दैट एनिमेटेड स्टोरी? एंड इट वाज नॉट इजी फॉर पैब्लो टू बिल्ड द पाइपलाइन. जब वो बिल्ड करने के लिए स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में वो एक मास्टर प्लान बनाया था. पैब्लो डिसाइडेड आई डोंट वांट टू कैरी द बकेट एवरी डे एंड ही डिसाइडेड आई विल कंस्ट्रक्ट अ पाइपलाइन. वो विचार आया उसके मन में, बट व्हेन ही शेयर्ड इट विद हिज क्लोज फ्रेंड ब्रूनो सेड नो. तब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इवन जब ब्रूनो ने नो कहा, पैब्लो के अंदर वो करेज, वो साहस रहने के वजह से he could actually take the decision. So today's question to all my beautiful, fantastic Project 1K participants, what is the kind of personality you have? आपके अंदर किस तरह की personality है? Are you an entrepreneur जो सही टाइम पर सही डिसीजन लेता है और आगे चला जाता है, या आर यू अ पर्सन जो हर चीज को पोस्टपोन करते करते यू आर वेटिंग फॉर सम मैजिक टू हैपन? इफ यू आर वेटिंग फॉर सम मैजिक टू हैपन एंड सेइंग वन डे, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो दोस्तों, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड. फॉर एग्जांपल, when our PV Narasimha Rao, our ex Prime Minister, respected Prime Minister of this country, वो एक situation से गुजर रहे थे. He was going through a situation and somebody asked him, "Sir, what have you decided? What have you decided to do?" तो PV Narasimha Rao ji ने very calmly, cool, he replied to the journalists. उन्होंने कहा, I have decided not to take a decision. इसका मतलब, my dear friends, in your life, whenever the situations are coming in front of you, when the people are coming in front of you, the issues are coming in front of you, अगर आपने decision नहीं लिया, if you don't take a decision, that also is a decision. Not taking a decision is also a decision. फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे लोगों को बिजनेस बताते हैं, हम गो एंड टॉक अबाउट, हम लोग जाकर लोगों को बताते हैं, वी गो एंड स्पीक टू पीपल अबाउट बिजनेस. सम पीपल, मेनी ऑफ द टाइम्स लोग साइन अप नहीं कर पाते हैं बिकॉज पीपल कांट टेक डिसीजन एंड दे अवॉइड द डिसीजन. समटाइम्स दे पोस्टपोन द डिसीजन. But let me tell you, there is psychologically a problem. What people go through, they actually want to be in the known zone, which is actually their comfort zone. And sometimes decision लेने का मतलब ये होता है, I have to move out of my known zone to an unknown zone. और we all know about the deer psychology. अनीश वर्गीस जी shared with us बहुत समय पहले, 4-5 हफ्ते पहले, या almost about 2 months ago, I remember Anish Varghese ji, he shared about the deer crossing the forest. और जब वो हिरन जब वो पहाड़, मतलब वो फॉरेस्ट में ना हाईवे जब क्रॉस करता है, तो ऑटोमेटिकली हाईवे की दूसरी तरफ, यानी लेफ्ट साइड इज अ अननोन जोन एंड राइट साइड इज अ नोन जोन. सो when the deer is crossing, the deer psychology is not to go into the unknown and to run back to the known. So many people don't take a decision. वो decision ले नहीं पाते because हम सब लोग अपनी known zone में रहना चाहते हैं, which is actually our comfort zone. So going from the known zone to the unknown territory is how an entrepreneur can conquer bigger things in their life. जो हम नहीं जानते हैं, अननोन जोन में जाने के लिए हमें कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है. टू डू इंडस वीवा बिजनेस ऑल्सो इज अ डिसीजन.
बहुत सारे लोग ये डिसीजन ले नहीं पाते. दैट इज व्हाट वी से व्हेन यू आर डूइंग द सेल्स क्लोजिंग, यू हेल्प द प्रोस्पेक्ट, स्पेशली जब आप रिक्रूटमेंट करने जाते हैं, इवन एट दैट मोमेंट आप अपने प्रोस्पेक्ट को हेल्प करें डिसीजन लेने के लिए. वो एक पुश थोड़ा सा हमें देना पड़ता है ऑन द रिलेशनशिप बेसिस. रिलेशनशिप के तौर पे या रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोगों को थोड़ा सा पुश करना चाहिए, बिकॉज पीपल बेसिकली हैव अ प्रॉब्लम टू टेक अ डिसीजन. सो एज एन एंटरप्रेन्योर you should be able to take more and more decision. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड कर लिया कि एवरीडे मॉर्निंग आई विल गो टू द पार्क नियर माय हाउस, और वहां पर मैं लोगों को आई कॉफी वाली ब्रोशर में शेयर करना चाहता हूं. I want to put a stall and वहां पर I want to share the brochure about eye pulse. I want to put a standee about eye care, and I want to invite all the women who are coming for walk, और उनके साथ में eye care के बारे में बात करना चाहता हूं. This is a decision. If you take this decision, what will happen? मैं आपको बताता हूं. You are in point A, right? You are in point A. You want to take your decision and go to point B. If you take this decision, you went to the park and you started distributing the brochure, what will happen? Every decision is taking you forward, forward, forward. For example, I decided कि मैं इस पार्क के पास जाकर I want to actually put the standee of eye care, और लेडीज जो आते हैं वहां पर उनको मैं कुछ ब्रोशर्स देना चाहता था आई केयर के बारे में, विमेन हार्मोनियल वेलनेस के बारे में, होलिस्टिक कॉम्प्रहेंसिव वेलनेस के बारे में. तो इफ आई हैव टेकन दैट डिसीजन, इट इज अ डिसीजन, मुझे वहां पर जाना है, वो काम करना है. एंड आफ्टर दैट, after 2-3 days, if I realize, array, this park is full of men, ladies are very less coming here, no problem. At least पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का जो जर्नी है उसमें यू हैव गॉन फॉरवर्ड, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीवीज, एटलीस्ट मेंटली यू हैव गॉन फॉरवर्ड. You have taken a decision and gone forward. And at least after 2-3 days, you can realize, and that is one more quality of an entrepreneur. When you step forward and आपको लगता है it is not the right decision, you have to acknowledge it. You have to accept it. And आपको अगर clarity है that is not the right decision, you take another step back and say, yes, if I win, if I take a decision and if I win, it is a win. If I don't win, I learn. So for an entrepreneur, एक entrepreneur के लिए हर एक डिसीजन, हर एक मिस्टेक के अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एंड दे से फेल फास्टर टू सक्सीड सूनर. यानी यदि हम पॉइंट ये में वेट करते रहेंगे, यू विल कीप ऑन वेटिंग, यू विल नॉट टेक अ डिसीजन. एंड लेट मी टेल यू, नो डिसीजन इज ऑल्सो अ decision. And if you are not making mistakes, if you are not moving forward, you are not in the same place. Actually, you are moving backward, because every minute, every second, the clock is ticking and the time is moving forward. आगे समय आगे जा रहा है, तो automatically every minute यदि आप decision नहीं ले पाते हैं, it is actually increasing. Abhilash ji, my mentor, used to say, delay is increasingly expensive. यानी जितना हम डिसीजन लेने के लिए भी डिले करते हैं उतना ही एक्सपेंसिव हो सकता है. मैंने फॉर एग्जांपल अपनी टीम के अंदर, आई टोल्ड वन ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर अ रूबी, आप एक 4-व्हीलर खरीद लो. वो बहुत सोच रहे थे, सर 4-व्हीलर मुझे अभी खरीदना है क्या, शुड आई टेक द 4-व्हीलर गाड़ी नाउ, मैं ईएमआई कैसे भर पाऊंगा, डाउन पेमेंट कैसे अरेंज करूंगा. तो ही वाज कीप ऑन डिसाइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years. एंड 2 साल के बाद उन्होंने डिसीजन लिया, आई विल बाय अ 4-व्हीलर. एंड आफ्टर ही बॉट द 4-व्हीलर, 1 महीने के बाद वो आकर मुझे कह रहे थे, सर आफ्टर बाइंग माय 4-व्हीलर माय बिजनेस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, मेरा इनकम जो बढ़ रहा है, मैं ज्यादा लोगों को सर्विस दे पा रहा हूं, स्टॉक अपनी गाड़ी में रख पा रहा हूं. आई टोल्ड, माय डियर, आपने डिसीजन 2 साल डिले किया तो योर डिले इज इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव. आपने अपना ग्रोथ जो है उसको 2 साल डिले किया. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो वन क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू टेक डिसाइसिव डिसीजंस. डिसाइसिव डिसीजंस यानी नॉट वेटिंग फॉर द मोमेंट टू टेक द राइट डिसीजन. सही डिसीजन लेने की एक मुहूर्त या एक सिचुएशन के लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए. हमें डिसीजन लेना है,
अपने लिए डिसीजन लेना है फॉर योरसेल्फ, फॉर योर टीम मेंबर्स, फॉर योर एसोसिएट्स, एंड कभी कभी दैट डिसीजन you have to take and then make it right. या कभी कभी if you're not taking a decision also, वो भी एक decision हो सकता है, and not taking a decision is also a decision, and delay is increasingly expensive. So for example, you have taken a decision, उसके बाद आपको पता चल रहा है it's not working out, no problem, you can always retreat and move ahead in the other direction. For example, there are 3 roads in front of you. आपने डिसाइड किया मैं लेफ्ट लेता हूं, अगर लेफ्ट लेने के बाद इफ यू फील द रोड इज नॉट द राइट रोड, कम बैक एंड टेक द नेक्स्ट exit, otherwise come back and go to the next exit. So whatever it is, as an entrepreneur, we must keep experimenting and learning and keep moving forward. So one quality of an entrepreneur jo main dekhta hu, that is actually having the courage to take decisive decisions. So what is your situation in your life? आज इस सेशन के बाद आफ्टर 6:30 we have 10 minutes of yoga. That's a very good way of strengthening your mind and keeping your mind calm and cool. So yoga session के बाद at 6:40 go for a morning walk today. Maybe sit with a notepad and start writing down कि what are the things which is actually put on hold. मैं अपनी indusviva journey के अंदर ऐसी चीजें, क्या मैं बहुत सारी चीजें मैं अपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, तो उसको भी आप चेक कीजिए. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई पुट इन द कोल्ड स्टोरेज, व्हाट आर द डिसीजंस व्हिच आई हैव नॉट टेकन. और आज ये माइंडसेट आप अपने आप बना लीजिए कि आई विल टेक अ डिसीजन, आई विल नॉट वेट फॉर टेकिंग द राइट डिसीजन, लेकिन डिसीजन लेकर उसको राइट बनाने के लिए मैं काम करूंगा. आई विल वर्क टुवर्ड्स मेकिंग माय डिसीजंस राइट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट डिसीजन. एंड डेफिनेटली रिमेंबर दिस ऑल्सो, डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है. लाइक आई टोल्ड यू द एग्जांपल, इफ आई एम डिसाइडिंग नहीं यार मेरे घर के पास जो पार्क जो है वहां पर मैं स्टॉल नहीं लगाना चाहता हूं, that time I want to invest to go to maybe Rotary Club, and there I want to meet some people and talk about our indusviva products. I want to go and put a standee in front of the yoga class. That is also good. For example, in my team, some people came and told me, sir आपके टीम से वो लीडर जो आपके साथ थे वो चले गए, वो किसी और स्कीम में चले गए या किसी और नौकरी में चले गए, कहीं और चले गए. I really appreciate, because I used to tell people, if they are taking a decision, it is a fantastic thing. Let them take the decision and stand with that decision. So we, as indusviva's project 1K members, we taken a decision. We have taken a decision. हमने decide किया कुछ समय पहले, maybe 1 year back, 2 years back, 3 years back, 4 years back, some people 5 years back. There are many people here, those are already diamonds, they are also here. So हमने decision लिया and we have reached here. And now don't be stagnant. आपको यहां पर stuck नहीं होना चाहिए. You have to move forward. So there may be some decisions, आपके लाइफ में कुछ ऐसे decisions होंगे which you are not taking, which is not actually allowing you to move forward. So आज इस सेशन के बाद after the yoga session at 6:40 exit this meeting and after the yoga session, and then आप आज थोड़ा सा बैठकर as an entrepreneur review your path, review your journey, how you have been taking decisions. Because when I started my journey with indusviva, log mujhe पूछ रहे थे, Prem, are you sure? Are you taking the right decision? Are you actually realistic? Right? Because बहुत सारे मेरे दोस्त लोग आज भी they are working for someone, they are in a job. They are in a job. And जब मैं अपनी BBA के बाद I started looking at the direct selling industry, उस टाइम पे भी लोग मुझे पूछ रहे थे, प्रेम, is it the right decision? तो I remember telling them, I don't know if my decision is right or not, but I will make sure I will work on making my decision right, and I will work and I will stand with my decision. और दोस्तों आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं मेरे लाइफ में, मैंने जो भी डिसीजन लिया, आई एम नॉट टेलिंग दैट मिस्टर प्रेम कुमार इज मिस्टर परफेक्ट. I have taken thousands of decisions. Yes, out of 1,000, 300, 400 decisions were wrong. I'm acknowledging it today openly. 304. I can tell you there are many decisions which I took which is wrong.
So for example, I brought somebody in the business, it was a wrong decision. मैंने किसी को sponsor किया, it was a wrong decision. I traveled to one place near my from Bangalore for 4-5 months. It was a wrong decision. I couldn't build a business. I opened some market. It was a wrong decision. So out of 1,000, 400 or 300 to more than 300 to 400 or 40-50% decisions were wrong. Array, let me tell you, even if there are 900 decisions wrong, I am rich with 900 decision making ability. But 100 decisions which are right has made me a royal black today. So that means it's okay to make mistakes. It's okay to make wrong decisions. At the same time, quickly learn from that mistake and step back and change your direction and go towards your success. So दोस्तों, ये है आज का एक टॉपिक जो आज के आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, the quality of being an entrepreneur in making decisive decisions. So hope आज के सेशन से आप लोगों को बहुत ज्यादा अपनी बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए थोड़ा सा और फ्यूल दिया गया, मिल गया यहाँ से, और यहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी में दे पाया, बिकॉज क्लैरिटी इज power. So let us make decisions. Let us take decisive decisions. Yani, take the decision and make it right. So thank you very much.